Okay, good evening, Assalamu alaikum. So today we will start the new chapter that is reaching the age of adolescence. तो शुरू करने से पहले मी से बताइए मेरी आवाज आ रही है आप सब लोग को? Okay. So reaching the age of adolescence means in the previous chapter we had studied about the reproduction in animals, okay, where we studied about the asexual reproduction, we studied about the sexual reproduction. Now here specifically we are talking about the changes which take place in humans. Basically, when a human is born, it undergoes different phases of life. It goes infancy stage, it goes for the childhood stage, then it goes for the adult stage, then it goes for you can say the old age. So during this phase of different phases of life, the human experiences different changes. One of the changes what the maturity that occurs, or the changes or the reproductive organs that becomes functional. The reproductive organs, they become functional, and they start functioning means the male reproductive system, they will be starting, and they will start doing their function, production of sperms and all everything. They are ready for you can say copulation, or means they will be involved in different activities, because the thing is the reproduction has to take place, because the species has to means prevail. They should go from means they should increase in number. So that's why, and in the similar way, the females, they undergo changes. Their reproductive organs become functional. The every change that is accompanied and that is done for the reproduction, because if the reproduction will take place, the baby is going to be born. So all these changes need to take place, and they take place in the human body. And that particular, you can say, age, the period, the duration during which the reproductive organs become functional, and they start maturing, they start developing in terms of size, also in terms of function also. So that particular age is considered to be adolescence. Okay, so in this chapter we are going to know means what changes take place in our body. What are the differences between girl and boy? The changes that is taking place in the girl's body, the changes taking place in the boy's body, and what are hormones what are responsible factors for it, and we will get to know other things also. Okay, so in this chapter we are going to study about the physical changes which is going to take place during the development during this stage, specifically the adolescence. Then we will see the changes that take place at puberty. Puberty is the age at which the you can say the reproductive organs become functional, they start functioning. So that starting age is called what? The puberty. Okay, then we will study about the secondary sexual characters in boys and girls, then hormones, the roles of hormones in developing, the sex determination in means baby, how the sex is determined, means the baby is going to be boy or baby is going to be a girl, means what are the you can say the responsible factors for this. Then we are going to study other endocrine glands which are going to produce hormones. So these we will study in this particular chapter. Okay, so let us start with this, that is means different phases of life as I talked about. Okay, so as you can see, the stages of life. Okay, the first one is what? The infancy. First one is what? The infancy. Means you call the child as infant. Okay.
So the stage of growth from 0 to 2 years means when the baby is born up to 2 years. So you will call, means from 0 to 2 years, you will call that particular baby as infant. So the stage of growth from birth to 2 years is called infancy. It's called what? The infancy. Okay, next one, that is childhood. Okay, now childhood is what? Means before adolescence. That is 2 to 12 years. Okay, so the stage of growth from 2 years to 12 years of age is called childhood. You will call them child or children. It's called that is known as what? The child. So during childhood, what is going to happen is during this childhood, let me move it further. Okay. So one thing, the body means the children, you can call it, they will grow in size. Okay. And they will bear weight, means their weight will also increase. The size will increase and the weight of the body will increase. So first thing that will happen generally means that is the increase in size and weight of body. ओके और इनके अंदर जैसे जो इमोशनल ग्रोथ होती है मींस यू कैन से इंटेलेक्चुअल यानी धीरे धीरे वो समझदार होंगे ठीक है इंटेलेक्चुअल ग्रोथ दिखाई देगी उसके बाद इमोशनल सोशल ये ग्रोथ दिखाई देगी अगर हम इन्फेंसी की बात करें तो जनरली इसके दौरान क्या होता है मींस दे लर्न टू सिट दे लर्न टू स्टैंड दे लर्न टू रिकॉग्नाइज द थिंग्स अराउंड देम तो और भी चेंजेस आते हैं मींस बेसिक चीजें हम बात करें Okay, so means these are the things. Now coming to the next stage. So this is infancy and this one is what the child. Now next one is adolescence and puberty. Okay, adolescence and puberty. Now, as you can call it, means adolescence is the stage of growth between childhood and adulthood. Is called adolescence. And it generally goes from 13 years to 19 years. Generally we call this age as teen age क्योंकि teen आता है ना 13, 14, 15 that is teenage. Okay, got the point? Any confusion, any doubt? अब देखो यहां पे भी मींस ऑब्वियसली बॉडी साइज इंक्रीज करेगा
इमोशनल ग्रोथ होगी, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होगी। लेकिन इस एज के दौरान मेन जो फोकस होगा इस एज में, दैट विल बी रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी। Reproductive maturity. So the main concern will be what? That is reproductive maturity. Okay. And ठीक है, और यहीं पे अगर हम प्यूबर्टी की बात करें तो प्यूबर्टी मीन्स जब इन्हीं चेंजेस का, जैसे मैंने कहा ना कि जो रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी है, तो इसका जब ऑनसेट होता है, जब शुरुआत होती है, तो उस एज को हम क्या बोलते हैं? दैट इज प्यूबर्टी। Is that vary? That goes from 12 to 14 years. Means if you talk about girl, the puberty age comes in girl generally means earlier than boys. Means that is 12 to 13 years. And in boys, it may vary, that is 13 to 14 years. It also vary depending on means the country and the region. Means it also varies about. Okay. Okay, now coming to the last phase, that is adulthood. Okay, now what is adulthood? Means obviously after 19 years. ठीक है, देखो वैसे मतलब अगर हम बात करें कि भाई इन्फेंसी हो गई, कैरेक्टराइजेशन है, चाइल्डहुड हो गया, कैरेक्टराइजेशन, एडोलेसेंस आ गए, इस चैप्टर में इसी की बात करेंगे, रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। ठीक है, एडल्टहुड, ठीक है, तो मींस जनरली अगर हो मींस द स्टेज ऑफ ग्रोथ आफ्टर एडोलेसेंस is called adulthood. Is called adulthood. Okay, तो यहां पे और भी मेच्योरिटी है, यानी रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी तो आएगी आएगी, उसके साथ साथ सोशल, इंटेलेक्चुअल, सोच में, बिहेवियर में, बहुत सारी चीजों में चेंज आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये कहा जाता है कि एडोलेसेंस मींस यहां तक जैसा वो बॉय या गर्ल अपने आप को डेवलप कर लेता है, अपनी सोच को, अपनी चीजों को, अपने मींस बिहेवियर को, अपने थॉट्स को, इमोशनली, सोशली, इंटेलेक्चुअली मींस जैसे वो कनेक्ट करता है, तो वही उसी तरीके से अब वो बाकी जिंदगी, हालांकि चेंजेस जब वो चाहे ला सकता है, ठीक है, लेकिन एक असर जो पड़ता है ना, जो यहां तक पूरा टीन एज तक जो उसने अपनी गुजारी है, मींस जिस बेसिस पे, जो तरीका, जो अपनी लाइफ को उसने गुजारा है, तो उसी के बेसिस पे उसका एडल्टहुड डिफाइन हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं हो सकता है, मतलब ये एक जनरल बात है। ठीक है, बाकी फिर उसके पास जो एज होगी, फिर उसके बाद एक्सपीरियंस होगा, उसके आसपास जो लोग हैं वो उसको थॉट्स कैसे दे रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। पॉइंट समझ में आ गया? आगे बढ़े। Okay. Now coming to the next point, that is changes at puberty. What changes take place? Okay. So first, increase in height is seen. Increase in height. That we see generally. Okay, there is an increase in height. Okay. Next one, changes in body shape. The body shape changes. As you can see in the boys, the shoulders become broader, means comparison to the previous age, or you can say, okay, the means the body become more muscular.
If you talk about the girl, means what is going to happen? Means in the hip area, the fat is going to deposit more. In the thoracic area, the breast area, the fat is going to store more. Okay, because the development of breast will be there. Then the hip region has to be widened. Okay, so in that area also fat deposition is seen. So the changes in the body shape is seen. जब छोटे होते हैं तब थोड़ी मीन्स अब आप देखो जब आप छोटे होते हो या इन्फेंट स्टेज होती है या फिर बच्चे भी होते हैं 3 4 साल 5 साल 6 साल आप उनको कपड़े पहना के तो मीन्स यू बाय द वॉइस एंड ऑल एवरीथिंग ऑब्वियसली लड़कियों की पिच जो है वो ऑलमोस्ट एक जैसी ही होती है ठीक है और कभी कभी तो होते हैं ना लड़के होते हैं आप उसको कपड़े पहनाते हो तो कहते हैं भाई आपका ये लड़का कितने साल का लोग पूछते हैं क्योंकि उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे लेकिन जैसे ही प्यूबर्टी आती है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होता है अब एकदम डिफाइन हो जाता है हाँ भाई शी इज गर्ल एंड ही इज बॉय गेटिंग माय पॉइंट और नॉट सो चेंजेस इन बॉडी शेप इज देयर change in voice means if you're talking about the voice for boys they become what heavy or you can say and the girl means voice become what the you can say sharp the pitch is high okay so the voice means basically changes take place obviously means visibility of voice box in some voice you can see that the voice box is clearly visible okay and in a female means hardly you see means any female is having what developing means the voice box and all okay so these changes also so as I said you that the voice in the boys that will be deep for the boys and that will be shrill for the female patli ho jayegi ठीक है visibility of voice box will be there next one there will be increase in activity of sweat glands sebaceous glands sweat glands obviously sweat secrete पसीना आएगा ठीक है जाहिर सी बात है इसीलिए हाइजीन का जो पार्ट होता है हाइजीन का एक पार्ट होता है क्लीनलीनेस तो अपने आप को साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पसीना आएगा अगर नहीं नहाए धोएंगे नहीं साफ सुथरा रखेंगे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस है स्मेल आएगी ठीक है बैड ओडर आएगा तो वो चीज है तो स्वेट ग्लैंड स्वेट इट एंड sebaceous gland that secrete what oil or sebum ओके तो इन एक्टिविटीज इनकी एक्टिविटीज जो होती है वो क्या होती जाती है बढ़ जाती है नेक्स्ट चेंजेस दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस दैट इज डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स okay development of sex organ will be there means they will increase in size means also their means their function will be there means egg is going to ovulate means ovulate sorry okay ovulation will be there every month so in female also means what happens especially the menstrual cycle starts and this start of menstrual cycle is called what the menarche okay menarche that is menarche okay yeah, this takes place especially in females okay next means what other changes will be there means mental maturity okay intellectual emotional maturity all these things will be seen इसीलिए ड्यूरिंग दिस एज एडोलेसेंस होता क्या है बहुत जल्दी गुस्सा आता है बहुत सारी चीजों पे बुरा मानते हैं ऐसा लगता है कि सब कुछ पूरी दुनिया में जो है वो बस जान गया है मीन्स इतना गुस्सा आता है कि पेरेंट्स से टीचर्स से बदतमीजी और इन सारी चीज ये सारी चीज क्योंकि बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं ना रिप्रोडक्टिव चेंजेस हो रहे हैं
हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, तो एक इम्बैलेंस बना हुआ है बॉडी में, एक उथल पुथल मची हुई है, ठीक है। वो जाके टीनेज जब खत्म होगा, जब एडल्टहुड में आएंगे तो एकदम सेट हो जाते हैं। तो ड्यूरिंग दिस स्टेज व्हाट हैपेंस, दीज काइंड ऑफ चेंजेस बहुत ज्यादा मींस, पता है बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, कभी अच्छा लग रहा है, कभी नहीं अच्छा लग रहा है, कभी बहुत अच्छा लग रहा है, कभी एकदम खुश होते हैं, कभी एकदम नाराज होते हैं, ये सारी चीजें होती है। तो इसीलिए इस एज में जो बच्चे होते हैं, इन सारी चीजों पे कंट्रोल करना होता है, ठीक है, कंट्रोल करना होता है, ये समझना होता है कि ओके नहीं, मुझे अच्छा करना है, मुझे अच्छा सोचना है। ओके, अगर कोई बुरी बात भी दिल में आ रही है, जहन में आ रही है, किसी से बदतमीजी करने का या किसी को जवाब देने का, या दिल चाह रहा है कि अरे यार उससे मैं बात ही ना करूं, मींस एनीथिंग एबल इफ यू आर कमिंग, सो जस्ट सी दैट वो बस इस एज के दौरान हो रहा है और ये मुझे नहीं करना है। ये समझना पड़ता है इस एज में जो बच्चे होते हैं। और इस वक्त अगर अपने आप को वो जो बच्चे हैं अच्छे से बना लेंगे, अपनी सोच को अच्छा कर लेंगे, तो वो आगे लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। तो ये सारी चीजें होती है, उनको लगता है बस बादशाह हो गया और पूरी दुनिया उनके काबू में आ गई है और वही सब कुछ जान रहा है, सामने वाले कुछ नहीं जानता है। अरे पापा आपको क्या पता, मम्मी आपको क्या पता, कुछ आप लोग जानते भी हैं, मतलब इस टाइप की फीलिंग जो है बहुत ज्यादा आने लगती है। तो वो सारी फीलिंग क्यों है? बिकॉज ऑफ द इम्बैलेंसेस विच इज गोइंग ऑन, बिकॉज चेंज इज अकरिंग, ट्रांजिशन हो रहा है, चाइल्डहुड से एडल्टहुड में आ रहे हैं, ये बीच का एज है, रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी कभी महसूस ही नहीं की थी, वो एहसास शुरू हो जाता है, वो चेंजेस बॉडी में दिखना शुरू हो जाते हैं, तो वो अनकंफर्टेबल फील होता है। तो ये सारे चेंजेस जो होते हैं वो बॉडी में है, तो इसकी वजह से, ठीक है, तो ये सारी मेच्योरिटीज जो हमारे अंदर आती है एंड वी गेट डिस्टर्ब। ओके वेट, ओके नहीं उसको बात करिए। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस आते हैं, मींस इस दौरान जो होता है बच्चे ज्यादातर इंडिपेंडेंट, मतलब खुद से, वो अच्छी चीज है, खुद से करना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ज्यादा ही खुद से करना चाहते हैं, मतलब कुछ ज्यादा ही हो जाता है, मतलब वो अपने आगे किसी को समझ, लेकिन इंडिपेंडेंट फीलिंग आना शुरू हो जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात है, सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं कुछ। लेकिन सेल्फ कॉन्शियस होना बहुत अच्छी बात है कि भाई ठीक है हम मींस अपने आप को, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, मीन्स हर चीज के बारे में, कैसे दिख रहे हैं, कैसा लुक आ रहा है, लोग क्या कहेंगे, अरे मेरे पास तो यही जैकेट है, अरे एक ही जीन्स है, यही जीन्स मैं दोबारा कल पहन के जाऊंगा जाऊंगी तो फिर लोग क्या कहेंगे, मतलब ओवर कॉन्शियस भी हो जाते हैं, उसी को कंट्रोल करना होता है। और जब एडल्ट में आते तब सारी अकल ठिकाने आ जाती है, सब समझ में आ जाता है, फिर ये सारी चीजें मैटर ही नहीं करती। वही समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जैसा कि मैंने कहा, मतलब फीलिंग आ जाती है, इंडिपेंडेंट होने की फीलिंग आ जाती है, सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं। ओके, मतलब अच्छा दिखना, ये सारी चीजें बुरी बात नहीं है, यू शुड लुक प्रॉपर, बट गेटिंग इट ओवर, बहुत ज्यादा जब ओवर होने लगता है तब वो प्रॉब्लमेटिक होता है। फिर उसके बाद अट्रैक्शन टुवर्ड्स अपोजिट सेक्स, मेल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फीमेल, फीमेल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मेल,
This is all done. That is a natural process. Attraction towards, because that is going to happen, but we have to control over it. That is going to happen because reproduction has to take place. The male has to be attracted towards female. The female has to be attracted towards male. Then the reproduction will occur. So these things are normal. These are the natural changes which are taking place. So attraction towards opposite sex. Okay, but we have to focus on the present. For example, if you're studying, so we must focus on the study, not getting attracted towards opposite sex and all. So we are going to ruin our study then. If we are in job, so we will ruin our job, because that is one of the part, that is the fraction main we have to means to go with our life. Okay, so these things will be there. These are the natural feelings, but we have to make a control over it. Okay, मीन्स कंपनी दोस्तों के साथ रहना ज्यादा अच्छा लगता है। कहते अरे दोस्त के साथ जा रहे हैं घूमना फिरना, अरे नहीं जाओ, रात हो रही है, अरे पापा मम्मी आप लोग नहीं जानते, नहीं घूमेंगे तो कैसे आप लोग रोक सकते हैं, सब होता है ना। सो नीड द कंपनी ऑफ फ्रेंड्स। पता चला कि नहीं अब इस स्कूल में, अब तुम्हें दूसरे स्कूल में जाना, अरे नहीं नहीं जाना, वहां पे हमारे दोस्त हैं, ये है वो है, ये सारी चीज है आजकल घर घर की कहानी है। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं एडोलेसेंस जो है बहुत ही इमोशनल टाइम होता है, और पेरेंट्स को भी समझना होता है, सिर्फ आपको नहीं, पेरेंट्स को, टीचर्स को समझना होता है, और इसी बेसिस पे फिर आप लोग की तरबियत की जाती है। टीचर्स समझते हैं, पेरेंट्स समझते हैं, वो इसके आफ्टर इफेक्ट्स को समझते हैं, आपके अंदर होने वाले चेंजेस को समझते हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंग आपको डील करते हैं। ठीक है, और अगर अच्छे से डीलिंग हो गई तो वो बच्चा जो होता है बहुत अच्छा निकलता है और चीजों को समझ जाते हैं, क्योंकि देखो जब बच्चा बड़ा होगा तो वो सारे चेंजेस आएंगे, मुझे समझना है तो मैं उसी के अकॉर्डिंग उसको डील करूं, यही सबसे अच्छी बात है। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट, दैट इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक। So the sexual characteristic which appeared at puberty, after the onset of puberty, you can say. Okay, means that helps to distinguish between male and female. Those characteristics are called what? The secondary sexual characters. Okay, तो अगर हमें define करना हो तो हम ये कर सकते हैं, the physical features. Wait a second. Okay, so secondary sexual characters हम कैसे define करेंगे? Means the physical features, okay, which help in distinguishing male and female is called secondary sexual character. तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस हैं जो कॉमन है मीन्स मेल और फीमेल में, और कुछ स्पेशल है। तो अगर मेल की बात करेंगे तो ऑब्वियसली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में अगर हम बात करें, सो वॉइस डीपेंस। Female, the voice becomes shrill. Next one, pubic hair develops. Pubic hair means the hair which is present around the reproductive organ. Pubic hair develops. Okay, next, hair under armpit grows.
In the female also, the hair under armpit grows. Next one, the boy starts producing sperms. Okay. Menstrual cycle start. Okay. In the menstrual cycle means obviously that is a part of it. Ovulation occurs. Ovulation means the release of egg. Every month it take place. Okay, ovulation occurs. Next one, development of breast. Next one, body become muscular. Fat deposition occurs in breast and hip area. Okay. Next one, the shoulder becomes broader. The mustache and beard grows. So these are the changes which occur in male and female, and these are considered to be secondary sexual characters in male and female. Getting my point? Okay. Now coming to the next topic, and that is menstrual cycle. Now this menstrual cycle occurs every month in the female, and this starts the start of the menstrual cycle, that is called what the means start every this starting. We are not talking about every month is starting. Oh. एक मिनट डिस्कनेक्ट हो. Okay, so the start of the menstrual cycle, okay, that is called what the mean arch means. Start means it is talking about. क्यों इतना हैंग कर रहा है? आपकी तरफ भी हैंग कर रहा है? पता नहीं क्यों. चलो. Okay, so as I told you, the menstrual cycle that starts means that happens every month,
and it repeats every 28 days. It repeats every 28 days. Okay, means if it will start from first day, for example, in any month, it goes on and it ends at the 28th day. Then again it is start, the next menstrual cycle will start. Okay, but it varies, means in different females. Some female is having the menstrual cycle of 25 days, of 26 days, of 24 days, means it depends, but generally the menstrual cycle is of 28 days. It goes on. Okay, so when first time the menstrual cycle is start, it is called menarche. The first time means the puberty has attained, the female has got the first menstrual cycle. So that start of that menstrual cycle is called menarche. And it occurs when the puberty is attained, means it is achieved, for example, 12 to 13 years. And then it goes on every month. Okay, now menopause is called when the menstrual cycle is going to stop. And it occurs at the age of 50 to 55 years. Okay. Now, what is going to happen means why this menstrual cycle indicates that the girl has entered the adolescence age, the puberty has age has been reached, and the girl is experiencing to change. Now, during this menstrual cycle, means it has got certain phases. One is called the menstrual phase, okay, in which the bleeding occurs. Okay. Next one is called the follicular phase. Okay. Next one is called ovulatory phase. Now this phase is there. See, now when ovulation will occur, ovulation means the release of egg will occur, and it occurs on the 14th day. For example, the menstrual cycle has started on the first day. For example, it has started on 5th of January. So this 5th Jan will be considered the first day. Now after this means the 14th day, means the 19th January, that is the 14th day of the start of the menstrual cycle. Now this ovulation will occur, and the egg of in the female body that is going to reside there for 2 days. Now here it will wait for sperm to fertilize. Okay, here means during these 2 days what is going to happen means if fertilization occurs, means the sperm has reached there, and if fertilization occurs, then baby will be born, as we also told you in reproduction in animals also. And if fertilization does not occur, means no sperm has reached, so no fertilization will occur. So if fertilization does not occur, then this menstrual cycle will continue and it will enter into the luteal phase. Means अगर fertilization हो गया तब तो baby born होगा, और अगर fertilization नहीं हुआ तो ये luteal phase में menstrual cycle आगे बढ़ जाएगी, यानी वो menstrual cycle continue रहेगी, और luteal phase पूरा होने के बाद 28 days पूरे होने के बाद फिर से menstrual cycle start हो जाएगी. तो इसका मतलब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो एवरी मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीट करेगी. ठीक है. और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, बेबी बॉर्न होगा, तो उतने दौरान जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगी. तो यहां से ये पता चला कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है दैट इज वन ऑफ द इंडिकेशन दैट रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द गर्ल, and it has got different phases, that is menstrual phase, follicular phase, ovulatory phase and the luteal phase. Ovulatory phase जब egg release होगा, अगर वो egg fertilize हुआ तो menstrual cycle stop हो जाएगी temporary, और फिर baby born होने के बाद उसके बाद start होगी. और अगर fertilization नहीं हुआ तो menstrual cycle continue रहेगी और every month repeat करती चली जाएगी. कोई doubt इसमें?
ठीक है, तो अब जो इस चैप्टर में रह गया दैट इज हॉर्मोन्स एंड बाकी तो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है। और फिर उसके बाद दैट इज अ सेक्स डिटर्मिनेशन एंड फाइनली द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, तो द रेस्ट टॉपिक वी विल टेक टुमारो। ओके, ओके देन चलिए, और कल क्लास 4 बजे होती है इंडिया के, पता है ना, फ्राइडे है। So okay then, stay home, stay safe. Assalamu alaikum.